नहीं है, वो टाइम से मावरा है, ऊपर है। टाइम का खालिक वो है, इस डायमेंशन का भी खालिक वो है, वक्त को भी क्रिएट उसी ने किया है। तो इसी तरीके से जब क्यामत में ये जो टाइम की बात हो रही है, उस वक्त भी उस पर टाइम नहीं असर करेगा। तो ये इंसानों के लिए हो रहा है, क्योंकि हम मखलूक हैं। एक जिस्म को जो मैस होता है, वो स्पेस और टाइम के उसके ऊपर इफेक्ट होता है, उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी चीज का भी मैस में या मैटर में या फिजिकली एग्जिस्ट करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक टाइम और एक स्पेस। कल क़यामत के दिन भी जब इन अजसाम को अल्लाह दोबारा उठाएंगे और दोबारा इनको जिंदा किया जाएगा और दोबारा महशर में इकट्ठा किया जाएगा, तो उसके लिए भी टाइम और स्पेस इनकी एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसिटी है, जरूरी है, नेसेसरी है। तो इसलिए वहां पर भी टाइम लगेगा। तो ये सिंपल सी बात है, अल्लाह की जात को ना उस वक्त टाइम चाहिए, ना अब चाहिए, ना पहले चाहिए था। जी जी, बेशक बेशक। जी जी, ठीक है, मुफ्ती मुफ्ती साहब चले जैसा देखिए। बोले आलम, हाँ जैसे आपने बोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और आलम की जगह। तो जैसे कुरान में हदीस में आता है कि हमने 7 आसमान के साथ 7 जमीन भी बनाए, और 7 जमीन ऐसे और बने हुए हैं। वमिनल अर्दि मिस्लहुन, ये सूरह तलाक की आखिर में है। खैर, अब ये तीसरा सवाल हो गया आपका। जी लास्ट है हम मेरा। सारे, नहीं नहीं, अभी और भी कॉलर्स लेने। अभी ये वाला बस सवाल शॉर्ट, अब अगली मर्तबा कीजिएगा। बस ये आपको तो थोड़ा मैंने मेन था, पिछले, ये शॉर्ट है। ये आपको ये थोड़ा पिछले मेन था, पिछली इसलिए मर्तबा शॉर्ट मैंने, बोले। अरे भैया सुन भी लिया करो, आपको मैंने पिछली मर्तबा ईमेल दिया था, आपने ईमेल किया मुझे? नहीं, तो ईमेल वो कीजिए ईमेल ना। में क्या है कि ये ये थोड़ा रहा, ये बातचीत में सामने बात चल रहा जल्दी है। समझ में आई थी ना, ईमेल में ये रिटर्न सारे, ये सामने उनको। चल रहा है ईमेल मुझे, चूंकि आपके इतने सारे सवाल हैं, सिर्फ हम आपके सवालात के जवाब तो नहीं दे सकते ना। आपके 2 सवाल के जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं। पर ये तीसरा ठीक हिंट है, था, थोड़ा शॉर्ट ही है आपके अगली बस। मर्तबा लूंगा अब आपका इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, जजाकुमुल्लाह। जजाकल्ला। अच्छा जी। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब भी नजर आ रहे हैं नीचे, उन्होंने भी माशाल्लाह वजाहत दी है। वो कहते हैं 1000 साल जिस आयत में मजकूर है वो अजाब के जिक्र के फौरन बाद आया है, जिससे यह मालूम होता है कि उसका ताल्लुक जहन्नम के अय्याम से है। 50,000 साल क़यामत का दिन और 1000 साल जहन्नम का दिन। जजाकल्ला। मुफ्ती साहब आप ज्वाइन करना चाहें बताएं, जगह बना देंगे जी। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। Mufti, sorry, I have had a question about a verse of Quran that Hadith claim that it is missing, and I have asked people, ordinary Muslim, they say that you have to ask a Mufti, and then when I want to ask you, you have been removing me in the past, so I don't know whom else I can ask about this Hadith that says a verse of Quran is missing, a Hadith about that says a verse of Quran, which is the verse of If life. I removed you in the past from my stream, there must be a genuine and justified reason, I think. No, I just want to know why this hadith says a verse of Quran is missing. Can you please explain for me? No, that I will explain, but because you said I removed you, so why did I remove you? Just Do you remember? no, just I asked you a question. Well, You I sit here to answer questions, and every day, every week, a lot of people come to my channel asking questions. Did I remove anybody? You have been waiting here for so long. Did I remove anyone? Okay, I hope that you answer me this time. Okay. Okay. Now, give me the reference of that hadith that says the verse of Quran is missing. All right. Yes, it is Sunnah Ibn Majah, Book of Nikah, Hadith 1934. And that must be the ayatul rajm, and it must says that a goat came and ate that leaf upon which the ayah was written, right? Yes, exactly. Okay, that hadith is weak. But it is first of all, it is in what is it? This sunnah.com. It's written. Let it be. Who cares? The hadith is weak. All right, another one. Sahih Muslim. Listen. First, let us clear this one, brother Mustafa. Let us clear this one. I made two-part video on my channel awazehaq official. Kya bakri Quran kha gayi? So this very hadith I mentioned there, and the point that Muhammad bin Ishaq is individually referring to or narrating this hadith. Which one is weak? And Muhammad Ahmad Shakir referred him as Za'if, Muhammad bin Ishaq. Okay. So I don't know whether you know the tafarrud of Rawi, a narrator, which is he individually is narrating this hadith. Okay. Can I now? So I mentioned two-part hadith. And the second thing, Brother Mustafa, you're saying that this hadith is mentioned on sunnah.com. Yes. And it is in Sunan Ibn Majah. And did you do your research about the hadith? Please, it is not just these hadiths, okay? There is no, hold on. Let's talk about this one first. Because you gave the reference of this hadith. Did you do your research on this hadith before you ask this question to me?
which research? What do you mean about whatever research? Me, yes. Did you investigate about the narration, whether it is an authentic narration or a weak narration? Did you do your research work? Look, people are acting upon these hadiths. Okay. No, they're not. We're not acting upon this hadith, and this is not the hadith that one should act upon. So there is no way you can act upon, even hypothetically you cannot act upon this hadith. I'm simply asking, did you do your research about this hadith or not? Yes or no? So upon which hadith yes or no? Look, you need to be honest. You need to be honest here, because then I have to remove you if you're not honest, and perhaps that's the reason why I removed you last time. Okay. So did you do your research on this hadith or not before you came here? Not on this particular hadith, okay? Because there are other hadiths. So you didn't do your research on this particular hadith, and you're saying that I asked around, and people are saying that you need to ask a mufti. So it means you were doing your research. That's why you are asking around. Yes. I mean, I don't know what kind of research you want, because Sahih Muslim, you know that brother Mujtaba, I have to interrupt you. Sorry to say, I have to interrupt you. First of all, people are saying in comments that you are a Sunnah rejector, irrespective of that. No, I am not. I'm not. No, they are liars. Okay, it's okay. It's okay if they are liars. Okay, just leave them. Okay, leave them. I just ask. Okay, listen. Mujtaba, amirhaq is not saying you're the Sunnah rejector. People are saying in the comment. I know. So he's simply. So don't call him liar. No, I said they are liar. I didn't say he's liar. All right. So your question about the first hadith is solved, right? Yeah. No. Look, because Sahih Muslim says also that your hadith, your question about. Hold on, Amir bhai. Your question about the first hadith is solved or not? Because the first hadith is not in Sahih Muslim; it is in Sunan Ibn Majah. Is it solved or not? Okay, that look, these are connected to each other. If you allow me to say that, these are connected to each other, because Sahih they Muslim, are not connected to each other. I know that Sahih Muslim hadith. Sections of two surah, right? So where is the verse? Because Sahih Muslim says that this verse was sent down, and we were reciting it, we were retaining it, we were acting upon it. But I'm afraid that by lap of time, people may forget it, okay? Because the verse is not in Quran, all right? So, and that hadith says that why it is not Quran, because it was eaten by a goat. So there is a verse. There is a verse. मुफ्ती साहब मुझे एक आयत पेश करने दे, क्योंकि ये सुन्ना रिजेक्टर के हवाले से जो भी मामला, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ. Brother, listen to me. Okay, yes. First of all, I told you there is a Ravi Muhammad bin Ishaq. That's why hadith is zaif in Sunan Ibn Majah. Secondly, Sahih Muslim is saying, we are not saying that there was no ayat about Rajam or Rizat Kabir. There was not in Quran. We know that very well. And we know how they get abrogated and how they get mansu'a. Okay, mansukha or mansu'a. Ya nasiya mansu'a, min nasiya mansu'a. Now I give you one ayat from Quran. It's Surah Al-Ala, chapter 87, verse 6. Read it for me, 6 and 7. But I have to bring it up. What do you say, which chapter? Chapter 87, Surah Al-Ala, Google. Verse number 6 and 7. Chapter, read it. Quran. You will get your answer from there. Quran. Which answer you want to give me? From just there? Listen overall about the application, about those ayats. Yes. Quran 67, verse 87. 87, brother. 87. Chapter 67, verse 87. Okay. 87, chapter 87, verse 6 and 7. Okay, 6 and 7, sorry. 6 and 7. Okay. 6, all right. Read it loudly. All right, just a second. I have to bring it up. It says, we will have you recite the Quran, O Prophet, so you will not forget any of it, okay? And? All right, and then 7. we will facilitate you, facilitate for you the way of ease. No. Ayat 6 and 7, brother. Kindly. 6 and 7. Sorry, 6 and 7. Next one. Yes. 6 I read. Unless Allah wills otherwise, He knows. Okay. Now I'll read it. I'll read it out in Arabic so that people know also. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sha Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. There is mention in Quran that Allah says there will be some ayat will be forgotten or abrogated, but don't worry, we will help you out. It's mentioned in the Quran, brother. Okay. Okay. So Hold on. Now, yes. Mujtaba, listen to me now. Yes. Hold on. Mujtaba, listen to me now. Yeah. Okay. So you see on my screen, I don't know. Do you understand Arabic? No, I don't understand Arabic. No. Okay. So you are giving the reference of Sahih Muslim and this hadith 1452. The hadith is reported by the main narrator is Yahya ibn Sa'id al-Ansari. He's a tabi'i. And he says that نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. So in the Quran there was an ayah which was about 10 رضعات, and then there was an ayah which was about 5 معلومات, meaning 5 رضعات. Then the same hadith is reported by Imam Malik. Okay, and he in his Muwatta he says كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okay, so there were 10 رضعات معلومات, then they became mansukh with 50 معلومات, and فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah صلى الله عليه وسلم passed away وهو فيما يقرأ من القرآن, and when they before his passing away, they were part of the Quran. Now this hadith comes in now the hadith of Ibn Majah comes that has the qissatu ma'iz, the story of sheep. That hadith is reported by, look at this, where is it yes, Al-Wajud Salih. A little bit zoom in, kindly zoom yes. in a little bit. Okay, this hadith is Yarwihi Muhammad ibn Ishaq. Exactly. Okay, and this Muhammad is Muhammad ibn Ishaq. Look here, Muhammad ibn Ishaq بالضعف والرد والشذوذ. فالحديث الشاذ عندهم هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة ما رواه الثقات الأحفظ منه أو الأكثر عددا. So the hadith is not sahih on any standard. Therefore, how can you give reference of a da'if hadith and then you say, well, the same hadith is in Sahih Muslim? No, the same hadith is not in Sahih Muslim. It's totally different. Okay, can I say something now? In Sahih Muslim and in Bukhari says that this verse came down, but yes, it was abrogated. The Quran is saying illa masha'Allah. The Quran is confirming that if Allah Azza wa Jal would want, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam would also forget an ayah, but that is up to the will of Allah. Okay, I understand. So you say that it was abrogated, but why people act upon it? Because the hadith in Muslim says that it is a duty. I'm afraid that by lack it's because of hadith, brother. The implementation of the rajam, that hudud, yes. It's just because of the practice of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. According to Muslims, we don't only take rules and regulations from Quran only. So we depend on hadith and sunnah as well. So we take I want to add one point. I think Mujtaba, when it was abrogated, why you have to follow it, brother? Hold on. Mujtaba, go ahead, Asim. Mujtaba, basically, I think you have to be clear that how many types of abrogation we have in the Quran. So one type is the ayah is abrogated to recite, but the hukum is there. So the recitation is abrogated, but hukum of the rajam is there. That's why we practice that. Okay, now can I play? Do you, Mujtaba, hold on. Now let me ask you this. Do you think that the sunnah is a source of legislation? Do you believe in that? Yes, sunnah is a source. Yes, exactly. But is a source of legislation, right? Yeah, yes, not fabricated one. We have a lot of fabricated. We're not talking about fabricated one. We're talking about sunnah, which is sabita. Sunnah sabita, established sunnah, is a source of legislation. You agree, right? Yes, I agree. Okay, all right. How do we know that the sunnah is sabita? There are many different ways. For example, you look at the chain of transmission. Another way of looking at the established sunnah is when you look at the action or the practice of the ummah. For example, the ummah has been practicing from one generation to another. All right, from the time of the companions, in fact, from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they have been practicing this. It shows that the sunnah is an established one. It is not fabricated. So rajam is one of those practices that the ummah had been acting upon it from one generation to another from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So it cannot be a fabricated one, and therefore it has to be a source of legislation. Okay, because the hadith says that we might forget it because we don't find the verse.
If you have to follow it, then why the verse? Well, because we don't have to. We don't have to, because if you have already admitted that the sunnah, the established sunnah, can be the source of legislation, so we can derive our legislation from the sunnah, even if it is not in the Quran. Okay, if it is stoning, okay, if the punishment for adultery is stoning, then chapter 4, verse 25 says, if they commit adultery after marriage, they receive, this is about your right hand possession, they receive half the punishment of a free woman. So how can you punish half a stoning of your slave girl or whatever your right hand possess? Okay, can you please explain for us? Wait. Which ayah are you referring to? Can you 425? Surah number 4, ayah number 25, huh? Yes, he's jumping. Actually, he's jumping from that ayah, the forgotten ayah, the lost ayah from there. Allah subhanahu wa ta'ala says, okay. Let Mufti sub search this ayat. I have a question for you. You know Sunan Ibn Majah, that hadith, who narrated that hadith? The Sahabiya, Hadrat Aisha radiyallahu anha, right? Okay, it says that, yes. Hadrat Aisha radiyallahu anha, right? Okay. That Hadrat Aisha radiyallahu anha, when she died in late 50s Hijri, right? Late 50s. Okay. And before that, there was according to the hadith or tariq, twice there was a time when they compiled the Quran. That was the best time for Hadrat Aisha radiyallahu anha, that she went to her father, Hadrat Abu Bakr Siddiq or Hadrat Umar Farooq, and then to Hadrat Usman, and she should have told them that there are two ayats that are eaten by a goat or they are lost. She didn't. Yes. In the late 50s. Why she didn't? If she knows that they are from Quran, that's an important question. Another thing is, look, Mujtaba, the criteria for rajm is that the person has to be muhsan. There is a term, and ihsan is a terminology that is derived from the Quran and Sunnah, and that includes that the person who's being punished must be Muslim, must be a free man or woman, okay, must be adult and sane. You need 4 conditions. So the person has to be adult, the person has to be sane, the person has to be Muslim, the person has to be free. And the punishment that is that you're talking about, that you're referring to in Surah An-Nisa, ayah number 25, that is about slaves. So they're not even muhsan. So obviously they're not going to be punished by the same punishment. So there are lots of good, benefit in not being Muslim. Okay, because if you are a Muslim, then you can be stoned to death. If you want to leave Islam, only if you commit a crime. Only if you commit a crime. Are you saying that a person should promote fahisha in the society and should promote adultery, and then that's how he can be saved from the punishment? Is that what you're saying? I'm saying obviously there are so many benefits for non-Muslim in this world. So we know Prophet ﷺ said that this world is heaven for non-Muslims. Who say the only benefits are for Muslims? Obviously. So your morality depends on worldly benefits. That if something is worldly beneficial in terms of world, then that should be accepted. Is that what you're saying? No, I'm not saying that one. I'm saying that this is what I understand from your point of view, that non-Muslims are in a better position because they can commit zina and they will save themselves from this punishment. Is that what you're saying? One point, perfect dawa. Let me please say also, like this ruling is regarding rajam, not regarding the. I think chapter 16 verse 61 says, perfect dawa. Wait a minute. This ruling is regarding the rajam, like non-Muslim should not be stoned, but I think the flogging should be applied on non-Muslims. So had is there, like perfect dawa, had is there for the non-Muslim also. So how they are at a better place. Look, if hold on, I need to conclude our discussion because it cannot go forever. Let me ask this question to yourself. Yes. What is your methodology of understanding a hadith? If you are not the rejecter of the sunnah, and you claim that you're not the rejecter of the sunnah, and you claim that the sunnah is the authentic sunnah is the source of sharia, source of legislation, what is your methodology of checking and investigating the hadith? Yes, if it goes against Quran, then I reject it. If it match with Quran, how do you know if it goes against the Quran? The Quran is Quran saying that don't do rajam?
Yes, Quran says that this rajam is just by pagans. Okay, let me read for you so many verses. Is Quran saying don't do rajam? Where does Quran say la tarjumu? Okay, before that, Mufti Sahab, the most important, the basic question is where do you driving this rule from Quran or Sunnah, so that you will reject those hadiths which are contradicting with the Quran? Because first of all, Quran says 100 lashes. Okay. And that is for ghair muhsan. 100 lashes for ghair muhsan. Yes. Quran says that these stoning. You see, that's the thing. You guys don't even understand the definition of contradiction. What is the definition of contradiction? Is takhsis an exception or exclusion from a general rule? You call it contradiction? Okay, look, Quran says that stoning. No, answer this question. Exclusion from a general rule. Is it contradiction? No. Prophet Muhammad supposed to explain. Are you answering my question? Exclusion from a general rule. Is it contradiction? Exclusion. What do you mean? Sorry, can you please explain? See, that's the point. You're saying, and you're not even whatever you're talking, but you're not understanding my question. Let me give an example, and then I will conclude. Suppose you're driving your car, and there is a stoplight, red light. What is the law? Would you stop or would you not stop? I stop. Yes. You will stop. So that's the law. This law is for everybody. But imagine if you are an ambulance driver and the emergency light is on and you see the red light. Would you stop or would you carry on? The ambulance, yes. Ambulance must continue, yes. Definitely. Must continue. So this is an exclusion from a general rule. Do you think it is a contradiction? No, I'm not talking about that. I'm just saying that. Game over. Brother, game over. This is not a contradiction. So the Quran gave a rule, and then the exception or exclusion of that rule can come from the Sunnah. This is not called contradiction. So before you talk about contradiction, you need to understand the definition of contradiction. Yes, I say that. Okay. Chapter 11. Thank you very much. Yeah, chapter Thank you very much, brother. We're done. We're done. You need to work on the definition of contradiction first. Come next time, and then we'll talk. We cannot drag this conversation forever. There are other people waiting. Stoning is just what pagans. Thank you. Thank you very much. So you are following pagan. Yeah, thank you. Thank you so much. मुफ्ती साहब मैं चाह रहा हूँ कि तर्जुमा थोड़ा सा मुख्तसर सा रख दूं, समरी निकाल के जी। ये भाई जो थे गो के दावा कर रहे थे मुनकर हदीस ने, मगर इनकी हरकतों से तो ये लग रहा था। खैर बार उससे कतई नजर जो गुफ्तगू हुई उसको मैं रख देता हूँ चंद सेकंड्स में, उसका क्रक्स निकाल के। वो आए, उन्होंने कहा कि हदीस ये कहती है कि कुरान में आयतें गायब हैं। वही मशहूर हदीस सुनन इब्न माजा की बकरी खा गई। उसके ऊपर मुफ्ती साहब ने वजाहत कर दी कि कैसे वो रवायत ज़ईफ है, उसमें मोहम्मद बिन इसहाक है, उसको छोड़ें। इन्होंने जंप किया सही मुस्लिम की को रवायतें आयतें आई थी, इसमें तो कोई शक नहीं। हमने भी कहा आयतें आई हैं मनसूखुत तिलावा, जिस तरह आसिम भाई ने कहा कि कोई आयत मनसूखुत तिलावा होने के बावजूद हुक्म बाकी रहता है, और कुछ ऐसी आयत होती हैं जिनका हुक्म मनसूख हो जाता है और तिलावत बाकी रहती है कुरान के अंदर। तो इस किस्म के मनसूख को हम मानते हैं। इसके बाद उन्होंने खुद माना कि वो सुन्नत को आईनी और तशरीही हैसियत देते हैं कि अहकामात में सुन्नत से फायदा हासिल किया जा सकता है। उस पर मुफ्ती साहब ने कहा तो फिर रजम हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस से लिया है, इस पर आपको क्या एतराज है? उस पर कुरान की एक आयत भी मैंने पेश कर दी थी कि सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, आप नहीं भूलेंगे कोई आयत भी अल्लाह के हुक्म से, मगर जो अल्लाह की ही विल में होगा, जो वो चाहेगा उसको बुला दिया जाए, नसख कर दिया जाए, नसिया हो जाए, उसके ऊपर तरीकाकार पे अमल होगा। तो उसके बाद वो बहस बराए बहस करने लगे, जिस वजह से हमने उनसे इजाजत ली। तो ये सारी बात थी। उस पर वो हुदूद की तरफ चले गए, जबकि बात असल आयत कुरान की जो गायब हुई है उस हवाले से बात हो रही थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुई। ये है सारा क्रक्स जो गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आसिम भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? असल में नहीं मुफ्ती, असल में ये आए थे पहले भी, मुझे लग रहा है मेरे चैनल पे भी आए थे। तकरीबन 15-20 मिनट इनसे गुफ्तगू हुई थी। और वो मेरे इसमें आके कह रहे थे कि मुफ्ती यासिर साहब से कहो मैं उनसे डिबेट करना चाह रहा हूँ। ये जब इन्होंने ये रजम वाली आयत निकाली तो मुझे याद आया कि ये तकरीबन 4 हफ्ते पहले मेरे यहाँ भी आए थे और ये कह रहे थे कि मुफ्ती यासिर साहब से मैं डिबेट करना चाहता हूँ। जी हाँ, असल में ये रिजेक्टर ऑफ सुन्ना ही थे, मुनकिर हदीस ही थे, और पिछली मर्तबा भी हमने इनको इसीलिए बाहर का रास्ता दिखाया था। मुनकिर हदीस कभी भी ये नहीं कहता कि मैं मुनकिर हदीस हूँ, वो हमेशा ये कहता है कि नहीं सुन्ना अथॉरिटी है, लेकिन जब वो कुरान से टकराएगी तो मैं नहीं मानूंगा, और उसको हर हदीस कुरान से टकराती हुई नजर आती है फिर फौरन। तो इन लोगों को, और बात यही है कि जब तक कि आपको कॉन्ट्रडिक्शन और तजाद की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आपको हर जगह तजाद ही नजर आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि तजाद क्या है। इसीलिए मैंने हजरत कुरान की आयत निकाल ली थी कि सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशाअल्लाह। जी, खुद कुरान में कहा जा रहा है, फिर आपको क्या मसला है? जी जी भाई कुमार साहब।
कुमार भाई बोले, आप लाइव हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आर यू देयर? कुमार साहब अवे हैं शायद। चलें जी, अब इनको बैक स्टेज ही रखें। शमशाद आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मेरा सवाल ये था कि हमारे यहाँ बरेलवी फिरका जो है उसमें वो लोग मजार पे जाते हैं, मैं और वहाँ इसका सजदा जवाब करते नहीं दूंगा, जजाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, एक्स हिंदू सन। अच्छा, ये नो मुस्लिम है माशाल्लाह, मेरे ख्याल से वही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं पूछना चाह रहा था कि तकवा, इखलास और आजिज़ी क्या होते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं? हाँ, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। तकवा, इखलास और आजिज़ी। देखें, कुरान करीम ने तकवे के बहुत सारे तरीके बयान किए हैं। उनमें दो तरीके मैं आपको बयान कर देता हूं। पहला तरीका तो वो है जो इंशाअल्लाह आप उस पर अमल करेंगे बहुत जल्दी रमजान में, और रमजान के अलावा भी आप उस पर अमल कर सकते हैं, कि जब एक आदमी अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू कर लेता है, और वो रिस्ट्रिक्शंस वो हैं जो आम हालात में हमारे लिए जायज हैं। खाना पीना हमारे लिए जायज है, और एक आदमी अगर मैरिड है तो अपनी मैरिटल जो 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 ताल्लुक है वो इस्टेब्लिश करना उसके लिए जायज है। लेकिन अगर उसने इन तीनों जायज चीजों को अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए हराम कर लिया रोजा रखकर, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो हराम चीजों से तो बहुत आसानी के साथ बच सकता है जब वो हलाल चीजों से बच रहा है। इसी को तकवा कहते हैं। कुरान करीम ने जो लअल्लकुम तत्तकून का जो जिक्र किया यानी रोजे के कॉन्टेक्स्ट में, वो इसीलिए किया है कि आप बहुत आसानी के साथ तकवा इख्तियार कर सकते हैं रोजा रखकर। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, कि अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ, यानी जो सच्चे हैं उनके साथ रहो। वकूनु मअस-सादिकीन, तो तकवे का जो दूसरा पैमाना और मेयार है वो है सच्चों के साथ रहना, कि अगर आपको तकवा इख्तियार करना है तो आप सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, उनकी कंपनी में रहें, इंशाअल्लाह आप मुत्तकी बन जाएंगे, क्योंकि सच्चों को देखकर आदमी सच्चा बनता है। लिहाजा हराम चीजों से बचना और सच्चाई इख्तियार करना तकवा ठहरा। ठीक है, ये तो तकवा हुआ। अब आ जाए तवाज़ो। तवाज़ो का मतलब ये है कि अगर आप, और उस एक और लफ्ज आपने बोला था इखलास, इखलास बोला था ना? जी 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 जी। इखलास को ले लेते हैं सबसे पहले। दूसरे नंबर पर इखलास का मतलब यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप शो ऑफ यानी रियाकारी की नियत से नहीं कर रहे हैं। मसलन आपने मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब आपने देखा कि यार लोग मुझे देख रहे हैं, चलो अपनी रकत जो है लंबा कर दो, लंबे लंबे सजदे करो, तो अब आप ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं कर रहे बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं। अब आपका इखलास खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप तन्हाई में भी उतने ही लंबे सजदे करते हैं और मस्जिद में भी उतने ही लंबे सजदे करते हैं, तो अब आपका सजदा अल्लाह के लिए, लोगों के लिए नहीं है। तो रियाकारी से बचना ही इखलास है। तवाज़ो का मतलब क्या है? तवाज़ो का मतलब यह है कि हम यानी एरोगेंस अपने अंदर किसी भी एतबार से न लेकर आए। अगर किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करें तो अल्लाह के लिए। ये तो अगर मान लीजिए मसलन मैं ये कहूं कि ये खुदा का दुश्मन है, लिहाजा मैं इससे दुश्मनी रखता हूं चूंकि ये खुदा का दुश्मन है, और मैं इससे 1000 दर्जा बेहतर हूं चूंकि इसने ये खुदा का दुश्मन है और मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, तो ये एरोगेंस नहीं है, चूंकि मेरी मोहब्बत और मेरी दुश्मनी खुदा के लिए है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि चूंकि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करता, और मैं उससे 1000 दर्जा बेहतर हूं चूंकि मेरे पास माल है, दौलत है, इसका मतलब यह है कि मैं एरोगेंट हूं, और ये तवाज़ो के खिलाफ है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको इन मिसालों से समझ में आ गई होंगी। जी बिल्कुल, आपसे माशाल्लाह इन बेहतरीन जवाबों की उम्मीद थी। और एक बात ये पूछनी थी कि जैसे कोई हमारे गैर मुस्लिम रिलेटिव्स हैं तो उनके इंतकाल पर तो जा सकते हैं? देखिए, ये एक इंसानी हमदर्दी के हवाले से चीज है कि आप मसलन किसी रिलेटिव के पुरसे में चले गए, पूछने के लिए आपने ताज़ियत कर दी, भाई बड़ा अफसोस हुआ, उसमें कोई हरज नहीं है। मसला होता है जब आप रिलीजियस रिचुअल्स के अंदर शिरकत करते हैं, वहां मसला हो जाता है, क्योंकि आप उस रिलीजन को छोड़ चुके, चूंकि उसके अंदर फ्लॉज हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर एरर्स हैं। तो जिस चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया, अगर आप उसके रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर रिजेक्शन का फायदा क्या हुआ? तो उस चीज को आप ख्याल रखें। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। वैयाकुम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई कुमार साहब, आपको एक मरतबा और ले लेते हैं, अगर आवाज आ रही तो ठीक है, वरना फिर जगह खाली कर दीजिए।
جی بھائی بولے. چلے ان کو نہیں بولنا ہے تو ان کو ریموو کر دیتے سائڈ ہیں. پہ کرتا ہوں جی. ہاں ان کو ریموو کر دیا عامر بھائی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ نام بدل کر آئے